Hello everyone. Hope you are all doing good. I am here again for the this week video जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस वीक क्या क्या अपडेट्स हुए and what all news points are impacting all of us in the stock market. So without any delay, let's start with the video. So starting with the key weekly news. तो क्या क्या रही मेन न्यूज इस हफ्ते? तो पहली मेजर न्यूज निकल के आ रही है कि देयर इज a possibility of an attack on Israel by Iran. एंड ये रिटेलिएशन में है ऑन द अटैक विच हैपेंड ऑन द ईरान एम्बेसी इन इन डमास्कस सीरिया. सो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद बाय संडे ये अटैक हो सकता है विच इज वेरी डिटरमेंटल टू आवर स्टॉक मार्केट ओवरऑल. बट लेट्स सी क्या होता है. यूएस हैज स्टार्टेड टू इंटरवीन एंड उसने अपने सारे वॉरशिप्स भेज दिए हैं. देखते हैं how this pans out, but this is a big danger to the overall market and to overall economies. Coming to the second news, US का inflation data आया इस महीने का और that was more than expected. It was around 3.5% for the month of March. So ये mainly due to oil prices थोड़े ऊपर निकले हैं और कुछ और पॉइंट्स आए हैं. तो बिकॉज यूएस इन्फ्लेशन का डेटा ज्यादा आया है, सो इससे ये लग रहा है कि जो फेड के रेट कट्स हैं वो और डिले हो सकते हैं, विच इज अगेन नेगेटिव न्यूज with regard to the overall stocks and indexes. But let's see how it pans out. But this is quite, the inflation data is quite high. The last news is that all the commodities like gold, copper, aluminium, zinc, they are all on fire. This is due to the fact that there has been some recovery in the Chinese and in the European economies. तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने अच्छा किया है और इंक्लूडिंग इन यूरोप एंड देयर इज पिकअप इन डिमांड ऑफ मेटल्स. एंड फॉर गोल्ड ये न्यूज चल रही है कि काफी सारे सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने दे आर परचेजिंग गोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, इंक्लूडिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना and many other banks, Central Bank of Turkey. There are many others, including RBI. तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड परचेज कर रहे हैं. पॉसिबली दैट इज अटेम्प्ट टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम द डॉलर. तो ये सब डी डॉलराइजेशन की बातें चल रही हैं बहुत ज्यादा since last 1 year, and I think all these things are somehow related to the de-dollarization. बट सोना जो है गोल्ड क्रॉस्ड 72,000 rupees per 10 grams of price, and it's up more than 15% in past 1 month, which is yeah, gold है. So these were the three key weekly news for this week. अब चलते हैं हमारे second part of the video where we will see the weekly gainers. So the पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक which has gained 26%. तो ये वही जो मैंने बात करी थी कमोडिटीज की, कि कमोडिटीज के प्राइसेस ऑल टाइम हाई मार रहे हैं, इंक्लूडिंग कॉपर प्राइसेस, निकल, जिंक. सो वेदांता ग्रुप कंपनी हिंदुस्तान जिंक zoomed up 26% in last 1 week. Second is Exide. So Exide ने did some takeover of a smaller company in EV space. So because of that news, it has zoomed around 23%. Vedanta, I think Vedanta and Hindustan Zinc are the companies of the same promoter group. So Vedanta, again copper, due to copper prices, it zoomed up 16.93%. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, सो केमिकल स्पेस में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बॉटमिंग आउट हो गई है और कुछ कंपनीज ने अच्छा करना शुरू कर दिया है. सो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इज वन ऑफ देम. So this has gained 12% on a weekly basis. And lastly, again commodities, हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है पिछले महीने, 1.5-2 महीने से. And probably it has gained around more than 200% in the last 1 year. तो हिंदुस्तान कॉपर ने 12.5% का जंप दिखाया है. सो ये भी का थीम ओवरऑल कमोडिटीज के ऊपर था, मेनली गोल्ड, कॉपर, जिंक and bit of fluorochemicals.
So these category of stocks zoomed up the most for this week. So let's go to the second part of the video where we will see the apologies, there is a typo. The weekly losers. So first is Reliance Power. So there has been an attempt by Hinduja Group to purchase the debt-ridden company Reliance Power, जो अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी है. तो इस पे 16.5% टूटा है स्टॉक. The second company to go down the most is GE Shipping Company, Great Eastern Shipping Company by 8%. फिर रियल एस्टेट के स्टॉक थोड़े से कूल डाउन हुए हैं, which included Prestige Estates, which went down by 7%. Then next is an IT stock, Intellect Design Arena, which went down again by 7%. And finally, there is a stock called Juniper Hotels, which went down by 7%. So mainly this week में power stocks, real estate stocks, and some of the infrastructure companies. These were the stocks which went down in this week. So that's it from my side. Hope you like the video, and I will come next week with the data and the stats for the next week. So if you like the video, do subscribe to my channel, and thanks for coming. Bye bye.